वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाहेंगे हैप्पी महाशिवरात्रि। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन में क्या हुआ था मौसम आपको पता है? मैंने कहा चलो थोड़ी सी मौसमी किट लगाती हूँ। anyway, मैं बता देती हूँ कि जो महाशिवरात्रि है उस दिन शिव जी की और पार्वती जी की शादी हुई थी। हाँ, मुझे मालूम था, मैं कंफर्म करना चाह रहा था। थैंक यू बताने के लिए। तो इसलिए इसको महाशिवरात्रि बोली जाती है। बट आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। यानी कि मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा एक नॉलेज का भंडार हमें मिलने वाला है। और वो टाइटल क्या बताएंगे मौसम? टाइटल है इज महाशिवरात्रि रेलिवेंट इफ यू आर नॉट अ हिंदू, सदगुरु महाशिवरात्रि 2022। वेल, देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। There are things happening in the world which affects every life. It's my intention, it's my wish and my blessing that you must ride this. It doesn't matter where you are, you don't have to believe or disbelieve anything. You just have to experiment a little bit. You must learn to ride the tsunami of MahaShivRatri. अच्छा लग रहा है ना? जो बहुत पसंद है। Hello Sadhguru, I've been following you for quite some time through YouTube, and I also follow the spiritual practices that you offer. But as a non-Hindu, I don't know if I can relate to Shiva. Is MahaShivRatri still relevant for me? MahaShivratri is of significance because of the planetary situation. So, MahaShivratri is relevant for every life that's upon this planet. When I say every life, if you are a worm, an insect, a bird, a tree, an animal, particularly if you are a human being, because to benefit, to really benefit, you need a vertical spine. Fortunately, we, the human beings, are the only ones who have attained to this possibility of keeping our spines vertical when we wish to. Those of you who've gone down, wherever you are, time to keep it erect. Because on this day, there is a natural upsurge of energy. Doesn't matter what religion you belong to, what culture you belong to, if you have a spine and it is vertical, you can immensely benefit. But even if you are an invertebrate, you can still benefit. Well, there is a lot that we can say about this as to how it happens. But to give a very simple example, all of you know that today our modern ships are nuclear powered and, you know, they are of a different kind. But still, for a sailor, but especially if you were a sailor 100, 200 years ago, where you were depending upon the sails, the tides in the ocean determined where you go and when you go. Tides essentially means because either of full moon or because of new moon. Those 2 to 3 days, the entire ocean rises. Millions of trillions of tons of water rises. You must know this, 96.5% of water on the planet is in the oceans, and it rises significantly on that day, on those few days rather.
This is also one of those days. So all the fluids in the world are rising. When the ocean can rise, yourself, wherever you are from, whatever culture you are, whatever you believe or disbelieve, your body is nearly 2/3 water. When the ocean can rise, do you believe the water in you doesn't rise? Okay. Is it possible? Because you're not born in India, it is not rising for you? It does. Anyway, it does. If you are conscious, you can make use of it for your well-being. Of the 12 to 13 Shivratris that appear in a calendar year, this is called MahaShivRatri in the month of Magha, where it has maximum impact on the system, simply because of the tilt and the position of the planet in relationship both with the moon and particularly with the sun. So, what you believe and disbelieve, what culture you come from, what you look like, doesn't matter. There are things happening in the world which affects every life. MahaShivratri is one of them, it affects every life. Those who are conscious can make use of it to become exuberant, ecstatic lives. You also know, on full moon days and new moon days, those who have unfortunately lost their mental balance and who are in serious conditions, let's say in institutions, those days all the institutions take extra care, because those days one's madness is also exaggerated. Because this is not about madness or meditativeness, it is just an upsurge. When there is an upsurge, when there is a big wave, if you know how to ride the wave, it will be great joy. If you do not know how to ride the wave, you will get crushed by the same wave. Somebody who is an expert wave rider, his dream is a tsunami. He would like to ride it. But the word tsunami would strike terror in most people's minds. So this is the same way. There is a little bit of a tsunami within you. It's my intention, it's my wish and my blessing that you must ride this. You must ride this towards your well-being. You must ride this to become an exuberant, an ecstatic human being. It doesn't matter where you are, you don't have to believe or disbelieve anything, you just have to experiment a little bit. If you're against experimentation because you're attached to some dogma, some fundamental belief systems, well, you can still experiment, but if you're against experiment, obviously you're fearful of the truth. Truth is not a bad thing. Truth seems to threaten you only because you have invested heavily in falsehood. If you have not invested in falsehood, what is the problem with truth? That is the best thing that can happen. But truth can dismantle things that you have invested in. This is a brief life. There are only two things to your life. When it comes to your experience of life, the profoundness of your experience. When it comes to your activity, the impactfulness of your activity. This is all there is to life. The rest is all nonsense made up in your head of wealth and fame and this and that. This is all in your head.
There are only two things: profoundness of experience and impactfulness of action. This is all there is to our lives. If you want this, if you want to craft your life in such a way that you determine how profound your life is and how impactful your actions are, then you must make use of these forces. You must learn to ride the tsunami of MahaShivRatri. बात करें सदगुरु जी की, तो वो मुझे लगता है कि ऐसे इंसान है कि उनकी बातों से जो है ना आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलते हैं। मैं बोलूँगी सबसे पहले कि मतलब मैं एक बहुत ही अदनासी इंसान हूँ और सदगुरु जी की बातें समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, इजीली नहीं आपको समझ में आती। और इनफैक्ट मैं यहाँ पर ये बात बोलना चाहूँगी, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हम लोगों को ये बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि लाइक आप ना देखा करें वीडियोस, आपको समझ नहीं आएगा। बट मैं ये सोचती हूँ जब हम सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी। और अगर हम नहीं देखेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। और अगर देखा जाए तो जो आज का टॉपिक था तो इस बात से काफी ज्यादा रिलेट करता है कि चाहे कोई भी स्पीशी है, आप किसी भी रिलीजन से, किसी भी कल्चर से, किसी भी फेथ से हो, वो मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है कि इस चीज का, इस रात का एक इम्पैक्ट होता है। और जितनी खूबसूरती से सदगुरु ने इसकी मतलब एग्जाम्पल्स कोट किए हैं इसके अंदर समझाने के लिए, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बहुत ही खूबसूरत लगी है कि इस रात का क्या एक उसका इफेक्ट होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैं बात करना चाहूंगा कि लोग ऐसे होते हैं ना कि उनकी आप बातें सुनते हैं तो आपको जो है ना, जो कहते हैं ना कि आपको समझ लेती है बंदा क्या किया गया है, लेकिन उसके अल्फाज इतने ज्यादा डीप होते हैं ना, उनके एक्सपीरियंस इतने ज्यादा होते हैं ना जिंदगी में कि वो उनके अल्फाजों को जब आप समझते हैं ना तो आप पर जो चीजें आश्कार होती हैं, आप एक बार हैरान हो जाते हैं कि यार ये बंदा इतनी बड़ी बात कर कैसे गया है। बिल्कुल। और जिस तरीके से मतलब हम लोगों ने पहले भी मैंने बोला कि महाशिवरात्रि के बारे में ये पता जरूर था कि शिव जी का और जो पार्वती जी हैं उनकी शादी हुई थी, तो उसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर की जो चीजें हैं कि उसमें जैसे एनर्जी का क्या एक रोल है, एनर्जी किस तरीके से अपसर्च करती है, उसका क्या इफेक्ट होता है आपके ऊपर। और हाँ, मैंने ये जरूर सुना हुआ है कि जो आपकी स्पाइन है वो वर्टिकल, यानी कि आपको जैसे आप मेडिटेट करते हो उस फॉर्म में आप बैठना चाहिए, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। बट मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी ये हो रही है और मैं ये जानना भी चाहती हूँ कि आप में से अगर बहुत सारे लोगों ने इस रात में मतलब इस तरीके से प्रैक्टिस किया है तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा कि क्या असर होता है, कौन सी एनर्जी फील होती है या आपकी बॉडी पर उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा होता है। बाकी मैं बात करना चाहिए जो उन्होंने जो समंदर की बात की है वो वाकई बहुत कमाल की बात है। बल्कि मैं कुछ चीजें ऐसे मेरे जहन में चल रही थी। ओके, क्या नाम लेते, जब आप समंदर को रात के टाइम देखते हैं ना तो उसकी एक अपनी ही दहशत होती है, एक अपना ही उसका एक खौफ होता है। और अक्सर हम मूवीज के क्लिप्स में या क्या नाम लेते हैं ड्रामों के क्लिप्स में ऐसे सीन भी देखते हैं कि रात के टाइम समंदर का जो एक वो होता है ना, वेव्स का जो बहाव होता है वो काफी ज्यादा आपको डिफरेंट देखने को मिलता है दिन के लिहाज से। बट मैं ये बात बोलूंगी कि जिस तरीके से एक साइंटिफिकली चीजें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं, यानी कि जो मून का एक आपकी उसकी जो पोजीशन होती है या जिस तरीके से उसकी कनेक्शन रहता है मून का, तो मुझे वो चीज बड़ा अच्छा लगा कि लाइक आप एक डायरेक्टली उस चीज का एक इम्पैक्ट बता रहे हो। और ये ऐसा है जो कि मतलब रियल लाइफ में हम चीजें देखते हैं, ऐसा होता है। और जो बॉडी का उन्होंने कनेक्शन बताया कि 2/3 जो पार्ट है हमारी बॉडी का वो पानी पर कंसिस्ट करता है। और उसका जिस तरीके से एक हम लोगों को कनेक्शन, ऑब्वियसली जैसे वो वेव्स जो हैं वो ऐसे ऊपर नीचे जाती हैं, हमारे इमोशंस भी इस तरीके से होते हैं। और अगर आप उसको वाकई में एक्सपर्ट हो कि किस तरीके से हैंडल करना है, बैलेंस करना है, तो डेफिनेटली वो चीजें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हर इंसान पर, चाहे वो किसी भी स्थिति में है,
उस पर असर रहता है इन चीजों का। यार मैं कहता हूँ कि ये जो चीजें हैं ना, यानी कि हम दुनिया में जैसे चीजें बनी हुई है, चांद है, सूरज है, लेकिन हम ये बस ये चीज कंसिडर करके बस ये बने हुए हैं, ठीक है, चल रहे हैं, लेकिन वो चीजें इंसान की जिंदगी पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो चांद के हिसाब से मनाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी रातें हैं जो चांद के हिसाब से जो है वो डिसाइड की जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो जहां तक मैंने एक चीज देखी, चांद खास तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। इवन कि मैंने जो सुना, ये जो बंदे ना जिसे हम कहते हैं हॉरोस्कोप भी कहते हैं, वो भी चांद को ही देखकर जो है इनकी उसकी मूवमेंट के हिसाब से ही डिसाइड की जाती है, डिफरेंट प्लैनेट्स की भी। लूनर कैलेंडर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगती है कि उसको डिटेल में बताया जाता है कि भाई क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। ये बहुत खूबसूरत बात मिलती है सदगुरु की। और जहां तक हम लोग पढ़ रहे थे शिवरात्रि को और महाशिवरात्रि को लेकर, तो मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग पार्ट था, और आई थिंक मौसम के लिए भी होगा कि शिवरात्रि वैसे हर महीने में आती है, बिल्कुल, लेकिन महाशिवरात्रि जो है वो खास माह का जो महीना बताया गया उसमें आती है। तो ये मतलब एक इंटरेस्टिंग पार्ट था हमारे लिए। और उसके बाद जो लास्ट में सदगुरु ने बात बोली कि जो प्रोफाउंडनेस ऑफ योर एक्सपीरियंस है या फिर जो आपकी एक्टिविटी का एक इम्पैक्ट है लोगों पर, ये वाकई में बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट होता है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि लाइक जो चीजें हैं ना वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच होती हैं कि हम लोग जाने अनजाने में उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं समझ पाते, लेकिन उनका इतना असर होता है हमारी बॉडी पर, हमारी सोच पर, हर चीज पर, हमारी लाइफ पर। तो मुझे लगता है कि अब आकर शायद चीजें जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो अच्छा तो नहीं, बट बेहतर तरीके से मैं जरूर कह सकती हूँ कि आपको समझ में आती है। अच्छा, एक और बात जो मैं यहाँ पर पूछना चाह रही थी, और वो ये कि जैसे कि सदगुरु ने बीच में बोला कि जो आपकी स्पाइन है वो वर्टिकल मतलब रहनी चाहिए, आपको ज्यादा इस फॉर्म में, इस पोस्चर में बैठना चाहिए, आपको मतलब अगर लेटे हुए तो भी आपको बैठ जाना चाहिए। तो मुझे ये चीज पूछनी है कि मतलब जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब उनकी जो मतलब बैकबोन नहीं होती, तो असर तो सब पर होता है, लेकिन उन पर क्या कम असर होता है, ये मैं पूछना चाहूंगी। प्लीज ये सब जो बातें हम आपसे पूछ रहे हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और मैं ये भी जरूर जानना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी पूछा कि अगर आपने एक्सपीरियंस किया है इस रात को तो जरूर हमें बताइएगा। और पर्सनली मैं यहाँ पर जाकर, यानी कि जो सदगुरु के जो ईशा फाउंडेशन का आश्रम है, मैं यहाँ पर जाकर जरूर इस नाइट को अटेंड करना चाहूंगी। सीरियसली आई डोंट नो, मतलब हम लोग पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं मैन के हम दोनों का ही वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, अगर हम लोग शिवजी के बारे में अगर बात करें, हाँ, जो स्टैच्यू है वो मतलब ईशा फाउंडेशन का है। और वाकई में उस मूर्ति में आपको एक एनर्जी, एक उस तरह की एक खुशी महसूस होती है उसको देखकर। तो गाइस जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आई एम श्योर कि अभी हमें इस रात से रिलेटेड और भी सदगुरु की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिले, जो कि जिसमें आपको लेजर लाइट के जरिए वो सारी एक स्टोरी जो है वो बताई जाती है, होता है, वो भी हम लोगों को देखने को मिले। अगर ऐसा हुआ तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, Goodbye. Goodbye.